Shanam, congratulations firstly. आपका एक project Oscar के लिए गया है. That's like a big thing and you part of Rocket Wheels. What would you like to say? Since we started Rocket Wheels, I've been a part of it. तो बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है, बहुत अलग है. Very unlike to other platforms. कुछ भी कॉपी नहीं हो रहा है. Everything is very original scripts. तो there's a reason we are able to get like most of the actors because उनको scripts जो हैं पूरा 6-6 महीना प्रोड्यूसर क्रांति सर दे वर्क ऑन द स्क्रिप्ट. उसके बाद में वो फ्लोर पे जाता है. देन वी ट्राई टू पुश एक्टर्स जो है इंस्टेंटली हाँ बोल देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट. Still it's evolving, but I think with Rocket Wheels is already evolved now. So जो लाइनअप है हम लोगों का वो बहुत अच्छे टॉप लाइन एक्टर्स के साथ में है. जो अभी तक की है वो सब टॉप लाइन एक्टर्स हैं. तो yeah, I think really happy that I'm the part of this Rocket Wheels. I have directed 16 shows for them so far. Yeah. Thank you so much for the show. Yeah, sir, आइए. He's one of the founders. Yes, sir. Start from Left to right, sir. This side. सामने सर क्या? Yes, yes. सामने. Your left. सर यहाँ. Let's start from this. Very much for coming for this event, and it's pleasure to have you all. So I hope there are a lot of celebrities. You also get a lot of bites. But the major event is about Rocket Wheels, the India's #1 OTT platform, as I call it as. So we are great here. We are going to sell emotions, a lot of stories, and we will be the first company in the world, or in India at least, to have 10 shows releasing in a day. So that's the key feature. So 9 months is a 9-month-old company and delivering like 10 shows in a day. So that's the key. Pratish, we want to know being 9 months in the orbit, मतलब 9 महीने में इतने सारे shows, first vertical app है, जिससे ये 10 show release होने का ही रिकॉर्ड नहीं, पर इतने सारे shows 9 महीने में बनाने का रिकॉर्ड सेट किया है. So we have done more than 75 shows till now, 70 plus shows, all shows beyond an hour of content. We do in 6 languages. That is the key. And if you ask me how were we able to do this, so basically there are a lot of stories everywhere. It is only about how do you identify them, how do you choose them, and how do you tell them. So we have got great team who are writing stories, who are telling stories, and who are creating stories. So all to my team, my directors, story writers. So we have got a brilliant team. So that's the only thing which has created 9 months, 70 shows. And I think you have worked with each and every actor mostly. Yeah. You know, that's also a landmark. Yeah. So you know, आपने पूरा जो एक film, satellite, and then you know now vertical apps, सब show में आपके shows में काम कर चुके हैं. So what happens, what I understand is that with all the actors, whoever I meet, they are not concerned about the format, whether it is going on telephone, whether it is going on mobile, whether it is going on OTT, or it is going for a big release. I see most of the two actors are worried about what is the story about and where do they fit in that story. So what we did is to get all these actors on board. One was obviously our co-founders like Kranti and Vikram sir. Both have got great relationships in the media. 18 years they have been into media industry, so they know everyone. So their word was one of the key features. But the second most important thing was the selection of stories. So we used AI also, we used real storytellers also, and you will not believe that we have read, evaluated, or done more than 6,000 stories, and out of which we got 70 made. So you can imagine the amount of filtration and the amount of people involved in the process of scripting screenplay. And if the story screenplay is all set, then it is all about the emotion. Indian audience is emotional. They say that the attention span of people is reducing or something like that. But I say the emotion span has never reduced, though the attention span is reducing. So if you are hooked onto a story, yes, they will binge watch it for 8 hours, 10 hours also. We are still small. We have done only 70 hours of content. Thank you, Pratish, and we're looking forward to see you again for the next year for Rocket Wheels. Today is a success party and it's completely rocky. What do you have to say? You worked with Rocket Wheels.
I have, and I just want to wish the entire team all the very best. It's just it's 9 months, and there's lots more to go. Imagine we're celebrating 9 months, so एक साल में क्या ही धमाल मचाने वाले हैं. So really excited, so happy to see all of you, and wishing the entire team, everyone who's in each and every series out there, and all the efforts, all the very best to us and So how does it feel, when you're part of some, project, especially Rocket Leagues, which is a pioneer in this vertical space right now, and they're like breaking records. It's not just that they're short, like so many series already. How does it feel to be part of something like that? Feels incredible. I think everyone wants to be, working with someone with a platform that's doing so well, and I'm really happy to be here today celebrating, and I really want to be back again every year as long as Rocket Reels is there. जब तक है जहाँ हम लोग सब आते रहे, celebrate करते रहे. Thank you so much and looking forward. कंसेंट है पर्सनल ये वीडियो मत Please come. The association काफी लंबा है और आपका recent जो आपने शूट किया सोनम पांडे के साथ, that's already been like talked about. Please tell us your association and their team here of the success party of Rocket Wheels. Hello everyone. First thing, I'm really, really proud to be associated with Rocket Wheels because I'm not saying anything about other platforms, but when I started working with Rocket Wheels, the thing was Kranti had this vision. He didn't want to do what everybody else was doing. So when I had met him, he said, let's go abroad, let's shoot international stuff, let's shoot in different languages with international actors. That's how I did my first 3 series with him. Everything was shot in Dubai with international actors. And the 3rd series, we brought in Ijaz Khan as the only Indian actor to be part of the international series. So most of the actors are flown down from Dubai today. And I guess we're going to be showing you all the trailer. And the show which I did with Poonam Pandey, we wanted to give Poonam Pandey a very different kind of approach and a look for the film. She's playing the Black Widow. It's a thriller, and I am sure people are going to be able to watch it. Any wishes to Rocket Wheels? Yeah, I really wish Rocket Wheels much more success, because what they are doing is they're disrupting the entire vertical industry. They're going to create content that is going to stay and people are going to enjoy watching. Directed 2 seasons of Instant Insaf with Rahul Dev. Both are working wonderfully. And just brief them about Instant. Instant Insaf was the concept, basically the idea that we get everything instantly in this world today, but one thing we don't get is justice. The idea was to create a lawyer who could break boundaries and give justice to the people, the victims of our stories, and that's how Instant Insaf was born. We were lucky enough to have visionaries like Rocket Wheels, like Pratyush sir and Kranti sir, who allowed us to go ahead and do it. And of course, Rahul Dev was a backbone working, adding the character. He gave the character there, Pratap Duggal, he gave so much depth to the character. He brought the life, and we were so lucky to have him because he brought the entire show alive. He was able to create a character that is, to this day I get reels and images of him from that the show. So a big thanks to Rahul sir for that. So 2 seasons gone of Insaf doing very well. We're hoping the character Dev Pratap Duggal is going to continue and show the world how Instant Insaf can be provided instantly. Thanks everyone. Thank you. ये कहना चाहूँगा कि रील्स का ज़माना आ चुका है, इतना आ चुका है कि अब बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे चीज़ें रील पे आ गई हैं. सो आई थिंक इट्स revolutionary its own way that somebody is launching reels format micro drama in such a massive way. So looking forward to join and also be part of as a host. So cheers to Rocket Reels, Kranti, Parul ji, everybody and our media fraternity. So thank you. Thank you.
Larson. I'm an actor and I feel so grateful to be here tonight for Rocket Reels. I am also acting in The Bachelorette Party, which will also be released tonight, so I hope you watch it and enjoy. You have come all the way from Dubai, so how was the experience once India has Rocket League has such I mean, India feels like home, also because I'm half Indian, so I felt right at home, and it was great seeing the cast as well. I know that Anastasia is here, Ijaz is here as well, and Aziz, the incredible director, so I'm really excited to be reunited with all of them tonight. जी सॉरी मैं थक गई, मैं पैदल आई हूँ घर से। मोदी जी ने कहा है ना, पेट्रोल बचाओ, खाना बचाओ, खाना मत खाओ, सोना मत खरीदो। मैंने तो जब से पैदा हुई कभी सोना ही नहीं खरीदा है, बस यही है मेरे पास। मोदी जी ये सोने का नहीं है, सोने का नहीं है। मैंने अब खाना खाना भी छोड़ दिया है, मैं सिर्फ हवा पे जी रही हूँ। बस जहाँ देखो हवा ही हवा है। क्या मैं गुब्बारा लग रही हूँ? Can you all hear me? Sunayi de raha hai na? So I'm really excited to be a part of Rocket Reels. I did an amazing show with them, which is called Bittu Ka Rocket. Where do I look? So I did an amazing show with them, which is Bittu Ka Rocket. It's a very, very funny rom-com, and after a very long time I'm doing something, and I chose to do it because it was a very, very good script and I had a lot of fun. सूख गई, सूख के काटा हो गई। सोने का पर्स लेके आ गया। हमारी मेरी रील्स कितनी बनने वाली है? मतलब मैं तो सिर्फ थैंक्स कहूँगा और मैं वो चीज़ फिर से रिपीट करूँगा। एक्चुअली पायनर्स तो ये लोग हैं जिन्होंने पहले वर्टिकल स्टार्ट किया है। मैं आज भी बोलता हूँ मीडिया ने पहले वर्टिकल स्टार्ट किया, आप लोग पहले थे जो हम लोग ऐसे वीडियो दिखाते थे, ऐसे न्यूज़ दिखाते थे। लॉजिकली तो हमने आप लोग से कॉपी किया है, बट येस बहुत खुशी है। 9 मंथ्स हुआ है, ये समझ लीजिए कि भाई रॉकेट रील बॉर्न हुआ है अभी, और आप इसी तरह अपनी ब्लेसिंग रखिए। सो वील हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पार्टीज। तो हमारा जो हमारा 1 ईयर पूरा होगा अगस्त में, तभी हमारी एक मेन बड़ी पार्टी होगी। ये तो ऐसी छोटी सी ऐसी एक गेट टुगेदर टाइप रखा है आज, बस और कुछ नहीं। नंबर्स की बात करें, इतने सारे नंबर्स हर चीज़ में, users, you talk about views, you talk about making of the verticals, everything you want to reach the benchmark. Yes. Next level आगे क्या? तो मतलब अभी तो हम लोग 9 महीने में हमने काफ़ी रिकॉर्ड कर दिया। हमने ऑलमोस्ट 28 लाख डाउनलोड से ज़्यादा कर दिया। हमारे पास 70 सीरीज़ लाइव है, और उससे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास कोई भी ऐसी सीरीज़ नहीं आपको नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन से कहीं भी आपको 19 भी नहीं दिखेगी। इतना ज़्यादा हमने कॉन्सेंट्रेट किया, इतना ज़्यादा हमने स्टोरी पे वर्क किया, इतना ज़्यादा हमने कंटेंट पे वर्क किया है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि हमारे पास ऑलमोस्ट आज 50 बड़े एक्टर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुश नसीबी। जो स्टोरी टेलिंग है वो भी अभी एक नया, जैसे आपने कहा इंट्रोड्यूस किया मीडिया ने, जो स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट का जो फ्लो है, हाउ आर यू मेंटेनिंग दैट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने जब देखा था कि बहुत से लोग, आज हमारे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत से लोग ना मोस्टली कोरियन और चाइनीज़ को कॉपी कर करके सीरीज़ बनाते जा रहे हैं, वहीं से स्टोरी उठा रहे हैं।
जबकि विक्रम सर और हमारा ऐसा बोलना था कि हमारे देश में इतनी सारी स्टोरी थी कि हमने पूरी दुनिया को स्टोरी देनी चाहिए। तो वो हिसाब से हमने सारी, अब देखोगे ना हमारी सारी स्टोरीज, हम लोग पहले वर्टिकल हैं या हम लोग पहले वर्टिकल OTT हैं या माइक्रो ड्रामा में जो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल स्टोरीज बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टोरीज बना रहे हैं, और इंडियन स्टोरीज़ को हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल ले जाएं, जो आज तक हमने किया है। इसलिए हमारे सुपरस्टार्स आज बाकी कंट्रीज़ में सुपरस्टार्स हैं, बाकी कंट्रीज़ के सुपरस्टार हमारे कंट्री में आज सुपरस्टार हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने कंपैरेटिवली हमारे हैं। तो वही कंटिन्यूटी हम लोग करेंगे कि ये देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम माइक्रो ड्रामा के सुपरस्टार्स, हमारे सुपरस्टार्स वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार्स बने। पर माइक्रो ड्रामा की जो बात की जाए उसमें आप थ्रिलर, रोमांस, एवरी जॉनर इज देयर। Yes. एज सिनेमा। Yes, it is a cinema. इंस्पिरेशन क्या देखा? इट इज़ अ सिनेमा से सिनेमा 2 घंटे की जगह 1 घंटा हो गया बस, और कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। आप ऐसे की जगह ऐसे देख रहे हो। और फ्यूचर वाइज अगर आप बोले तो मुझे, आप नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है जितनी पार्टियां या जितने प्रीमियर्स आपने शायद मूवीज़ के किए होंगे, उससे शायद अगले साल से उससे ज़्यादा प्रीमियर्स, उससे ज़्यादा पार्टीज़ आप माइक्रो ड्रामा के अटेंड करोगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। थैंक यू। या So we are having, yes, we're going to have an anniversary party to talk about. Start from here, this one. Ma'am, over here, everyone. Okay, my first vertical OTT with Rocket Reels is Bachelorette Party. This is Victoria. She is starring in it. She's done a wonderful job. I'd like to introduce my director, Aziz. Can you please join us? He is the right person to give most of the answers. My experience with Kranti has been incredible. In fact, he is one of the reasons why I turned producer with Bachelorette Party. And I'm very happy I took that decision. Victoria, what do you have to say working with this wonderful duo, Ijaz and Aziz? This was my first vertical series, and I feel so privileged and grateful to both Ijaz and Aziz for having me on this. It's an amazing platform, and specifically our series, The Bachelorette Party, is amazing. Aziz, what would you like to add? Dude, please say it's the first international series. Yeah, okay. So this is the first international vertical series of India. I don't think so any of the other platforms have done this. So this series we have taken it to Dubai. Ijaz was playing the main lead, and we had to have an international cast. So we got the Diva agency, which is owned by Nicole, and she did the search for us. We were looking for very good actors because obviously we needed people to match up to the acting powers of Ijaz Khan, and we did. We found 4 girls from Dubai, from different countries, and all of them have done an amazing job. So guys, please go on to Rocket Reels and watch हिंदी में बोलना चाहिए था। अच्छा, हिंदी में ये कोई बात नहीं। इंटरनेशनल सीरीज है, इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही होगा। ओके ओके चलो डन। This is your debut project, you know, and what do you have to say for coming to India and being a part of it? Yes, it was my first project, but it was an incredible project to work on, with incredible cast, incredible team, director, and I just had such a great time. I mean, the show itself is so fascinating. There's so many twists, and that's why I urge you to watch it, because I had so much fun filming it, and we had so much fun filming it, so I'm sure you'll have so much fun watching it too. We'll probably shoot a sequel soon. Yep, thinking of that. All right, thank you very much. Thank you very much. दूसरी कहानी मैंने भाई को सुनाई, उन्होंने कहा यार कमाल है ये तो, और परफॉर्म तो लोग समझते नहीं हैं एजाज को, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये परफॉर्मर कमाल का शूट हुआ है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको देखने के बाद। I want to die handsome. डायलॉग्स और चीज़ें जो कैरी करते हैं और किया है,
साजन को ऐसा देखो, है ना, एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा डायरेक्टर है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज एक्टरों को मैनेज कर रहा है। अभी ये बात सच भी है साजन, नॉट एवरी डायरेक्टर कैन मैनेज मी यार, यू आर अ स्वीट हार्ट। कितने घंटे काम करता हूँ साजन में? हम लोगों ने 18 घंटे काम किया, फिल्म सिटी की धूप में दौड़े हैं और मतलब बहुत मज़ा आने वाला है देख के आपको। बस थैंक यू गाइस, रॉकेट रील्स इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। Iftikhar, my friend, is in Dubai. Thank you, Iftikhar, to making me connect with Kranti, and thank you, Sajan, to convince Kranti to take me, because people when see me, they see me, they think I am something which no one can handle, no one can manage, and they don't work with me. But I work with Ejaz also. I work with every actor. तो थोड़ी सी controversy हो जाती है, but that forgive that part. And see me as an actor, है ना? So inshallah you will see this. I'm doing 2 web series with मैं them. लेकिन कहना चाहूँगा कि कंट्रोवर्सी को अलग रख के इनके जो टैलेंट, जो एक्टिंग का पार्ट है, अगर उसको आप देखोगे तो मुझे लगता है बहुत मजा आने वाला है। You will see this today. Thank you. Start from here, this corner. Ma'am, here, this corner. एक मिनट तू खत्म कर ले। Start from here, this corner. Madam over here, sir. And it was an amazing experience to work with her. Don't go on this sweet face. When you see her in the show, you'll realize what a fantastic actor she is. It was amazing. It was amazing. He's so professional. It's my first time in Bollywood movie, in Bollywood TV series, and the whole team was so amazing. And we did production in Dubai. It was very exciting. Actually, it's also my first Bollywood project here, and I'm very pleased to be here in Mumbai. It's my first time in India, And I'm sure there'll be more to come. 100%. Yes. You wait when this hits screens, you'll get a lot more projects. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. It's a very dynamic, creative platform. Hats off to Kranti Shanbag. He's genius. First vertical channel and platform for India, mashallah. All the best. Keep rocking, guys. Thank you. जो जिनके साथ मैंने वो किया है और अब अच्छा काम करने की कोशिश है। जैसे ही कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो हो जाती है, बन जाती है। लोग अच्छे हैं, प्रोडक्शन हाउस अच्छा है और ये किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल बना रहे हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें मेरे हिस्से में भी एक कहानी आई, तो साजिद भाई ने कहा कि भाई ये करना है, तो मैंने किया। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। जाकिर भाई हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ तो पहले जाकिर भाई को सुनाता हूँ। और पिछले 20 सालों में मैंने और इन्होंने पता नहीं कितना काम किया है। तो गाइडेंस होता है उनका, गाइडेंस होता है जाकिर भाई का। और जाकिर भाई जैसे एक्टर अगर आपके साथ काम करते हैं, आपके स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, तो फिर उसका मज़ा ही अलग कुछ होता है। और वो आप प्रोमो देखेंगे आप तो समझ में आएगा। थैंक यू, थैंक यू। Stay tuned. अभी
My name is Safi Kaur and I have done their 2 shows. One is their game show and one is the upcoming one that I have done. And they are really making some out of the box things and it's crazy and it's going really well. So my best wishes to Shiv sir and the Kranti sir. Thank you. हाथ भी दिख रहा है मुझे ओके ओके लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे लगे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा पूरी टीम को। क्रांति सर और दूसरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन्होंने दिन भर लगातार बहुत मेहनत करी है। And Shadab Bhai is one of the finest director what we have. So he has directed so many series. This is outstanding. The way जैसे जैसे नया नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, बहुत तरक्की करते हुए इन्होंने क्रैक इन किया है ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करना है इन शॉर्ट फॉर्म. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम. मेरी एक फिल्म भी है, so it's going to be great fun to enjoy that. And we have Suresh Menon sir. So enjoy. कैसे हो? बोल रहा हूँ, सब लोग मुझे प्लीज़ वोट देना. आई थिंक वर्टिकल रील्स बहुत चल रहा है आजकल एंड रॉकेट रील्स को बधाई हो. उनके साथ मैंने 2 शोज़ किए हैं एंड इट्स वंडरफुल टू सी देम सेलिब्रेट इन दिस मैनर. और उम्मीद करता हूँ कि और बहुत सारे अच्छे शोज़ आए. आई एम वेरी प्राउड दैट आई कुड डू अ शो कॉल्ड झुकेगा नहीं साला विच वॉज रियली वेरी गुड एंड अ कॉमेडी शो. जिग्नेश की शादी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड होपफुली ऑल ऑफ यू लाइक इट. प्लीज़ वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू. बहुत कमाल की बात है. रॉकेट सीरियल्स बहुत बहुत अच्छे जो है मतलब वेल नोन बन चुका है पब्लिकली. अब जानते हैं लोग रॉकेट सीरियल को, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और सीरीज़ देख रहे हैं. एंड मैं इनके जो प्रोड्यूसर हैं कांति जी, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ. डायरेक्टर हैं, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं. तो मैं आज प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर की वजह से यहाँ पर हूँ. एंड आई होप मैं भी जल्दी से रॉकेट सीरियल में कुछ अच्छा जो है प्रोजेक्ट करूँगी. और मैं जब भी ये बात करती हूँ मेरे सामने प्रोड्यूसर साहब आ जाते हैं और मुस्कुरा के निकल जाते हैं. एंड आई थिंक इसका जवाब वही देंगे. हाँ सर, सर इसका जवाब आप ही देंगे. Big congratulations to Rocket Reels, an entirely new format is in our world now, world of entertainment, which is the verticals, and I think it's a very exciting format. I've been watching the reels, I've been watching the content. It's amazing. Some of my very dear friends are a part of it, like Rohit Roy, Rahul Dev, and Ijaz Khan, and Azizi, who is directing some very interesting content there. And I am going to be doing some songs for this content. It's going to be challenging but very exciting. Thank you so much. Wait.
Yes, I am, and today I've always been an actor. I've always been in front of the camera, and then this for the very first time, I am going behind the camera, and I've produced certain content with Rocket Reels, and I'm really happy and I'm really glad, and I would like to congratulate the entire team. Very, very good luck. Thank you. Be careful, please. It's outside. So meet our team. हमने पहला रॉकेट रील्स के लिए एक शो प्रोड्यूस किया हुआ है जिनके कैप्टन ऑफ द शिप राजा है. ही इज़ अ बंगाली डायरेक्टर. इन्होंने बंगाल में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स की हैं. पूजा की भी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं. So welcome on board. Three films, yes. So welcome on board, Radha. So we are very excited because it's our first production, individual production, which is आज launch है उसका. हमारी सीरीज़ का नाम है श्राप. एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि सबको वो अच्छा लगे. बहुत मेहनत की है हमारी पूरी टीम ने. सौमिता, दैट्स पारस ने एक्टिंग भी की है, एंड बिहाइंड द कैमरा भी दे आर हेल्पिंग अस. तो वी आर अ टीम एंड वी आर अ कोर टीम ऑफ दिस शो. So we're really excited and looking forward and need all of your best wishes to do. Thank you. Thank you. Finished the shoot yesterday and it's an amazing character for me. It's called Begum Bano and बहुत जल्द आएगा Rocket Reels पे, and it's a very strong character for me. It's a lead, so I'm really excited about. I hope audience को पसंद आए. Thank you. It's exciting, yes. It's an exciting format, and it's obviously my first time. But anything that is new obviously needs some, time to set foot. So I wish them all the best, and I hope that as OTT जैसे उभरते उभरते अपने क्वालिटी में, अपने काम में, अपने एक्टर्स में, अपने टेक्नीशियंस में बढ़ता गया. I hope this medium also just keeps progressing. So all the best. Thank you. To cheer my little girl Victoria Larson, and I hope Rocket Reel does very well. Thank you. First of all, congratulations to the entire team of Rocket Reels. I think it's just been 9 months and a lot of milestones already achieved. So wishing them a lot of growth, a lot of creativity and blockbuster success. And I think Vertical is a new world these days, and it is becoming a big success, a big new. So Rocket Reels is doing great. So congratulations to them and all the best. Thank you. I think the attention spans being so low in today's generation, it's really heartwarming that Rocket Reels is really touching the heights, and with authentic content is reaching so many views. So I think this is fascinating. Of course, the 9 months have been exhilarating. The journey has been exhilarating, and as fast as Vertical Reels are growing, so is Rocket Reels. So all the best to them. Thank you so much. Thank you. Chance that I've had this wonderful opportunity और जो सहयोग मुझे मिला है रॉकेट रील्स की पूरी टीम के साथ, मैं एक खतरनाक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है बाबा आर्यनंद, और उनके बड़े चहेते लोग हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि इनके जितने फैंस हैं और इनके जितने ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स हैं, इनको बहुत 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 उन्नति मिले. राइट? This camera, this side, this camera, center, सामने, right में. I
I'm Sonia Birje, actor and DJ, and I have come for Rocket Reel's success party happening here tonight. And I'm also performing, playing music, and it's gonna be a rocking party. So looking forward to a great night. Cheers. I think success party is so definitely my good wishes to everyone at Rocket Reel. I think they're doing a good job and good wishes for them. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि काम करना चाहिए, काम करते रहो. I think it's definitely got a market. Can be the future as well, but time will tell. Upcoming projects अभी काफ़ी हैं, उसके बारे में I'll give a good announcement very very soon. वर्टिकल माइक्रो ड्रामाज इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर. जिस तरह से हम लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो पिछले 4-5 सालों में बहुत बदला है एंड आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर. बाकी कंट्रीज़ में तो बहुत ऑलरेडी ये पिकअप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे स्टिल इन नेसेंट स्टेजेस. रॉकेट रील्स आर अमंग द अर्ली मूवर्स, सो आई थिंक दे ऑलरेडी होल्ड एन एज. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू रॉकेट रील्स. शूट करने वाले हैं रॉकेट रील के लिए 26, 27, 28 दिस मंथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी कहानी है. मैरिज ब्यूरो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. भाई कमाल करने ही वाले हैं, और नमित भाई ने हाँ किया सब्जेक्ट को, तभी मुझे लगा कि कुछ है. No, I'm super excited because this is a new medium and I think ये इस तरह से फटने वाला है कि हमें पता भी नहीं चलेगा and before we know it this is actually become really big, if not already, you know. So congratulations to Rocket Reels, congratulations to the whole team, congratulations to Sajan ji and everyone. Thank you. मैं तो अभी रॉकेट में बैठा नहीं हूँ और आशा है कि रॉकेट में बैठूँगा. I am following Rocket Reels, and their stories are genuinely really addictive. You know, in this current era of when we are running short on time for everything in life, they have created this very interesting format of 1-minute reels, the pocket reels as they call it, Rocket Pocket. So I am looking forward to much more creatively interesting content that Rocket Reels will present to all of us. I'm wishing them all the best and looking forward to this journey. Thank you. तुम कहाँ जा रहे हो? अरे पूनम किधर है?
पूनम किधर है? Oh my God! ये क्या हो गया? कहाँ से बजता है? और नहीं करना राखी थांबा